Hello, we are live. Uh, hello. We are live. So let's move on to our journey. Hello, I'm Umama Iftikhar, currently doing my MSc in Mathematical Sciences here at Karachi University. I'm leading Google DSC chapter at Karachi University. Also, I am volunteer member at GDG Live Pakistan. So, moving forward, I'm a public speaker, debater, and I'm very hello. Am I audible to you? Yes, yes, you are audible. Assalamu alaikum. I think Umama is facing a bit of issues, so I'll be filling in for a bit until she's back. So my introduction is that I'm Aska. I'm part of Team GTG Live, and today we are having a session of female founders, the episode two, and we've got a wonderful guest with us today. We have Ayesha Zaman, who is the founder and CEO of Skills to Do. Um, so we will be carrying out this event today as more of like a podcast style sort of question answer event so that you guys could know a bit about Aisha, what her journey has been like, what she's done, and then afterwards we will learn a bit more about what she sort of faced as a female founder in Pakistan, what is the initiative that she's wanted to take forward, and why it's so necessary for female founders, for women in Pakistan to come forward and present their ideas, their, you could say, initiatives in this sort of space where it's such an important need for Pakistan to have such sort of founders. So, just to give a bit of an introduction about Aisha, as I mentioned, she is the CEO of Skills to Do. She's also the CEO of Bridge, a Tech Woman Fellow, and co founder of the Pakistan Tech Forum. Otherwise, I won't really take much more regarding her introduction. I want her to tell her story, and I feel like she'll be the better, you could say, narrator of her story. So, Assalamu alaikum, Aisha. How are you doing? Walaikum assalam. I'm just trying to do fine, but alhamdulillah, and thank you so much for having me. For joining us today, and a Ramzan Mubarak to you. So, Aisha, Definitely. as I did give a bit of an introduction to who you are, what you're doing, but I'd like to know a bit better from your own self. So, if you could just let us know a bit about yourself, what your journey has been like towards like starting Skills to Do and everything regarding that. So, I'd like you to take the floor for that because I feel like you could tell it much better than I would. Okay, well, that's, I think, um, that might take the whole session. That if I start to share the journey, because Skills to Do came very late in my journey. I have actually started and sort of failed a few startups before, and even today I'm running multiple initiatives. Skills to Do is one of them. They were striving to bring the quality education when it comes to IT skills in Pakistan, and not only that, we are also focusing on the placement opportunities not only in Pakistan but outside of Pakistan as well.
In addition, as you've shared, that I had in a co-working space with the name of Bridge here in Lahore, and Pakistan Tech Forum, which is, I think, the bigger phenomena in my life right now, because that is where I'm working on, something that I felt like working on when I turned 30 uh, last year, July. And I told my husband कि मेरी 30-year old self जो है वो चाहती है कि I should work on diplomatic relationships in the tech sector without having any clue okay, how I'm gonna do it, how is it being done, and all. But Alhamdulillah, fast forward, we did. I think I became like the first Pakistani woman to lead tech delegations to other countries. So we brought delegations of Pakistani tech businesses to Malaysia. It was very lucrative. We took to Singapore. Um, Up next, we're planning to Canada and stuff. So if I share about my journey, I think you'll have to be very specific because what do you want me to talk about out of this whole journey? Because this last 11 years, it's been a मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि मुझे काम करने की बहुत जल्दी है and it's not from today, it's when I started back in 2013. So there is a lot that I have done. So you might, if you throw me, you know, a specific question, so we might be able to fish something out of it. Yeah, sure. Okay, so let's specify this in that way. Okay, you started Skills to Do as a platform so that people could learn skills courses, because I feel like now Pakistan is transitioning into this place where, along with education, skills are what I would say the primary asset that we have. So how did you really come to that idea? Okay, this is something that we need to focus on. This is what we're lacking. This is how I need to build a platform and I need to contribute towards this. Perfect. So there is one thing that I tell my teams in all of the businesses that I'm doing. Okay, if I've gotten like a freedom of doing my initiatives in the jobs that I were doing, I would have been happily doing jobs even now. The only point when I had to, I would probably call myself an accidental entrepreneur because all of the initiatives are part of what I was suggesting other people to do. And when they didn't get the idea, then I had to start it myself. With regards to skills to do, I would say that for this, my um, one thing about myself, I do not have a degree. I dropped out of my graduation, so all of my career is actually based on self learning, is based on learning skills here and there, online and offline, and wherever I would get a chance to learn from other people. And fast forward back in 2016, uh, Punjab Information Technology Board was doing this pilot program because they had this space called Tech Hub, and that is where they used to house freelancers back then. And they wanted to work on improving the skills of the freelancers and bring in more freelancers because freelancers started to get Pakistani tech ecosystem highlighted. And we still we keep on ranking between the first, the top 5 countries in the world in freelancing. So PITB wanted to work on that, and we did a pilot program where we did like 2 workshops, and it was a house full, and that actually gave birth to what later became Pakistan's biggest offline initiative on skill development with the name of eRozgar, if you might have heard about it. So that is where eRozgar came in, and even before it was named eRozgar, even before we knew that it's going to get approved and going to be actually working on it, we had a couple of discussions, you can say, within the sort of back then the founding team of this program. And there were about, I think, 14 or 15 people there in the first few discussions that PIDB wanted to start something, and they wanted to have people aboard and all. So, and then the program manager once we were having this meeting, and she told that we want to work on this program, but then you may not get paid for until this program is approved, and we are not even sure that even if this program will be approved or not. That actually reduced the team to only, I believe there were only 7 people left to take up the challenge, and I was fortunately one of those because I like to
work in unpredictable circumstances. If I can predict something, I get bored. So that was my thing to do. And e-Rozgar, I would say, in e-Rozgar, when we were building it up, so we were supposed to build e-Rozgar training labs across 40 universities, across 40 cities of Punjab initially. And that in itself was a huge program to to roll out. And for that, the founding team, we were doing all sorts of things. We were working on building policies. I also built a curriculum around content marketing and advertising because by profession I've been an online marketer. And then recruiting about 200 trainers that would then go and train students in the universities. It was if you have like a taste of HR, or if you have done in this capacity, you can guess, to hire 200 people we had to do like literally thousands of interviews. So fast forward 3 years, I was very fortunate to be part of Eroscat program as master trainer, and sort of overlook the performance of trainers. We had wonderful people, and by the time I would say there were more qualified people in the program than I was being a master trainer. So I learned a lot from that program, not only about how to build a large scale program, but also what skills were in demand, what skills were people able to learn really quickly, what was making them make money. And there were many heartwarming stories started to pour out after 6 months, 7 months as we launched the program. A lot of people from a lot of remote areas of Pakistan started to earn, especially when the stories will come from women, how they took the lead. It was very heartwarming. So after 3 years, fast forward again, the program got approved on the international level with the name of NFTP. And that was the moment I thought we have reached the pinnacle of this program. Now, I think I had like two things in my mind. I thought that I feel now there has to be someone more qualified than myself. And this is one tidbit. This is one pro tip that I would like to have everyone as a takeaway, that you need to understand when it is your time to leave, right? When it is time for someone who is more qualified than yourself to take up the position. One, and the Aisha, I think you went on mute. If you could check. I think it says muted on your screen. If you could check from there. am I audible now? Yeah, you are. Perfect. Mm, I think something went bad with my AirPod. It still I think says that you're muted. Yep, I can hear you now. Working now, right? Yeah, it's Perfect. So yeah, the second takeaway out of this whole journey that I want to share is that I also thought that this is the maximum, and I wanted to live at the pinnacle of the program, and that's what I did. I resigned from the program. One of the reasons was I was to become a mom, and then I thought that 3 years at a place was a lot of learning for me. Now I have to move on to do other stuff. Um, while Erosgar was my more of a part-time engagement, I was doing a business with my husband back then. And when I was becoming a mom, I really felt, and then that was actually the time when COVID hit as well. And a lot of women would reach out to me and they would ask me, "Oh, can you tell us some skill that we can learn pretty fast? We want to help our brother or father who lost their jobs and a lot." And that would only make me think that I'm one person, and obviously I do not know all the skills that are out there. I can maybe teach one or two things.
And also, I cannot cater to the whole market. Actually, no one can, but I cannot cater to a lot of people, right? So I thought of a platform that can provide skills um, in the form of bite-sized courses, because people were in a hurry, and most of the skill development programs that we had were, you know, 4 months, and a lot of the programs were, they were over long span of time. People were in a lot of desperation. So that is where, cutting the long story short, Skills to Do came in. We started out with the bite-sized courses. So when I say bite-sized courses, what we did was we chopped down the skills into, you know 90 to 120 minutes courses. So it would go like, at Skills to Do, you wouldn't find a course that says become a 360 Facebook marketer or digital marketer. What it would offer you is one thing at a time, which means, um, you know, learn Facebook lead generation, one bite-sized course, and you have it. Um, you can have, maybe, how to segment the right audience. You have one course on that. Someone wants to upskill and all. So that was basically the idea behind it, and also we kept it a very good pricing point back then. But and we launched. We had a very fancy launch at Pearl Continental Hotel Lahore, thinking that it's going to be a huge success and all. So first few months we got really good sales, but then sales started to decline. And the other thing that happened midway was I also got very badly hit with postpartum depression. It was chronic. For 1 year, I wasn't able to work. I had to close on everything. The platform that I was investing on for past many months, I had to just stop everything. It was a very difficult decision, but I was pushed into it. I had very bad mental health. I was put on medication. It was very, I think, the saddest year of my life. And I think it gave me a lot of lessons as well. So fast forward, one year passed, and when I came back, we were able to look at the content that we had, and it was outdated. Wow. So all the investment that we did, all the effort that we did, was already outdated. So Hello, you want to say Aisha. something, Mama? Hello. Yeah, Mama. Am I audible to you? Yes, you are. Welcome back. Thank you so much, each and everyone joining us today. Again, मेरी तरफ से कुछ इशू हो गया था. Sorry, apologies for the inconvenience. आगे चलते हैं. Moving forward, मुझे मेरा आपसे सवाल ये है कि as female individual, आपने कैसे navigate किया उन challenges को, उन setbacks को, जो हम as a female individual हम daily अपनी routine में, अपनी family की तरफ से, इस society की तरफ से face करते हैं. तो आपने उन सेटबैक्स को कैसे नेविगेट किया, प्लस आपने उन चैलेंजेस के साथ साथ इतने सारे माशाल्लाह इतने सारे वेंचर्स कैसे सोचा और फिर किया, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. Sure. So when I started out back in 2013, तो अभी मैं student थी. I was just done with my fourth semester, and I was looking for my fit in the market, because again, as I said earlier, मुझे हर चीज़ करने की बहुत जल्दी है. So I couldn't wait for my degree program to finish, and then I would go out and start my looking for my fit in the market. So my my mother, she would a lot of times tell me, मेरी जो college time की और school time की जो मेरी सबसे close friends थी, they ended up into medical degree, and I ended up actually nowhere. Which means I sort of dropped into bachelor's for business and information technology, जिसकी उस टाइम पे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आती थी, क्या करी, क्यों पढ़ी है, क्या पढ़ी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी and this field was still not very popular among at least the household of Pakistan, and there were not as many women in the technology back then. So what I started to do was, in order Yeah, to yeah. expand my exposure, I would go out and attend business conferences. There was one conference that my senior from my university, she invited me for. She invited me to a meetup by Elance. Upward, जो कि पहले ओडेस्क और Elance तो अलग अलग प्लेटफॉर्म होते थे, तो Elance का वो मीटअप वो मेरे लिए बड़ा आई ओपनर था. And I met a lot of people, and I thought that yes, this is what I need to do. I need to meet a lot of people who are actually doing things that I'm still exploring. So then there was no going back. Then I followed a few platforms who were doing weekly, business conferences and summits, and I would go there and I would learn. And pretty soon I realized that
um, what I'm studying at my university um, is actually not going to fill up this hunger that I have right now. So what I started to do was I did sort of an internship in a software house. I learned how things work. There came a clash with the CEO there. He was very controlling and all, and being a woman, you need to say yes and all. Blah, blah, blah. So I wasn't like the right person for that kind of attitude. So I left, and he said when I was leaving, he said, "हम मुझे इससे ज़्यादा तनख्वाह भी लेके दिखा दे तो मैं आपको मान जाऊंगा." I said, "Okay." So I left, and I still remember I had 1,000 rupees because what would I have? I was doing an internship for 5,000 rupees. So 1,000 रुपये थे मेरे पास. मैंने UBA में जाके account open किया. I started my own virtual software house. Pretty soon I was earning good lot of money. Even my mother got really skeptic कि तुम्हें दे पैसे कहाँ से आ रहे हैं. मैंने कहा वो जब मुझे डांटती रहती है ना, मैं लैपटॉप पे काम करती रहती हूँ हर वक्त बैठ के, पूछती रहती है क्या कर रही हो, कि उधर से पैसे आए हैं. That's So what I did relatable. was yeah. So That's it was relatable. funny. Yeah, and also it was very challenging in the start because at times my Yeah, mother would be I happy, the understand. other time she would be Because pretty it's upset. Yeah, yeah, you're saying something? आई कैन रिलेट क्योंकि कुछ सिमिलर सिचुएशंस मेरे घर पे भी होती हैं. मैं काम कर रही होती हूँ और एवरीवन इन माय हाउस इज आस्किंग कि तुम क्या कर रही हो, और फिर जब अर्न कर रही होती हूँ तो सबको होता है कि यार आ कहाँ से रहे हैं. तो दैट्स Yeah, अंडरस्टैंडेबल एंड रिलेटेबल आई गेस. मेरा एक yeah, सवाल है. मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया और थोड़ा सा मुझे आइडिया हुआ. आपने एक वेंचर, एक आप उसके फाउंडर हैं, वाई वुमेन लीडर्स ऑफ पाकिस्तान. इसको मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे भी थोड़ा सा किया था क्योंकि इस चीज़ में मेरा बहुत इंटरेस्ट था. सवाल ये है कि why women leaders of Pakistan? What sort of opportunities are you providing uh, from this platform? okay. With Women Leaders of Pakistan, when I started to, sort of go out of Pakistan, represent Pakistan in multiple countries, my exposure actually expanded, and I saw a lot of women doing a lot of good work there. And when I came back to Pakistan, and I saw that a lot of women are doing good work here as well. But when it comes to leadership, we do not see a lot of women. And when I further drill down into the psychology of what is happening, तो हो ये रहा है कि I think this is the best month to talk about it. It's March. So I start to think about that the slogans that we have on different events like Aurat March and all. A lot of women who are working are pretty overqualified for those kind of slogans. हम लोग को तालीम भी मिल गई, हम लोग को बाहर काम करने की इजाजत भी मिल गई, हम लोग काम भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. वी हैव अब होता ये है कि क्योंकि खवातीन के लिए बहुत ज्यादा स्लोगन लग नहीं रहे होते, तो जो लग रहे होते हैं तो एट टाइम्स व्हाट वी डू इज वी डाइव डाउन टू मैच एंड से कि हाँ हाँ हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, हमारे साथ किसी और टाइप का बुरा हो रहा है. वो बुरा ये नहीं हो रहा, वो बुरा ये है कि women in Pakistan, I felt, have become so comfortable with having a share on the table. कि शुक्र है we got the share on the table, that we are not thinking about leading the table. So that is where Yeah. Women Leader Pakistan sprout in my mind, that we need to build a platform where we can attach leadership with the women so that they start to acclaim that yes, they can lead, without fighting for it, without, turning their male counterparts down. We have a decent, based on our credentials, we can do that. So it actually was, again, accidental. I had this vision in my mind, but I wasn't thinking of starting another platform because of all that I have on my plate. So I was just coming back from a wedding, and रास्ते में मुझे कुछ एक opportunity आई थी कोई United Nations की something, and I had to share it with women. तो मैंने ये सोचा कि मैं हर बार जो खवातीन को अलग अलग मैसेज भेज रही थी, so why don't I create a group of women that I have in my contact, and I started to find the All contacts. I created, and I'm just scrolling around. There's a lot of women, and by the time I was able to click create group, these were around 275 working women, and I was like, oh my god, I have so many working women in my network already. So I created the group, and on the go, I named it Women Leaders of Pakistan. I called up my team. I said, hey, I've started this community. Give me a logo. So they built me a logo, and I started it. So what we are doing right now in terms of opportunities is we are working on. We started out with monthly meetups.
but then we thought of doing something more tangible. So we recently did a leadership boot camp. And to my surprise, I actually posted a poll in the group that we're going forward to, 3 to 5 weeks boot camps. And I listed out a few topics. उसमें था, e-commerce marketing and blah, blah, blah. And there was leadership. And most of the women in that group, I was so happy to see they voted for the leadership program. And that That's is where I nice. was very fortunate to engage my mentor from Silicon Valley, Alia Chandra. She's the senior director at a Fortune 1000 company, and she helped us out in that program as a mentor. We had Kaval Chima. She's also at global director for Cisco, again a Fortune 500. So we had like a very quality, mentors in that program. So that's what we are working on to build That sounds leadership interesting. capacity. दैट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं खुद भी एज अ टेक इंडिविजुअल मैं सॉफ्ट स्किल्स को भी बहुत फोकस करती हूँ और जब भी मैं किसी फीमेल इंडिविजुअल अपनी टीम मेंबर से बात करती हूँ कि अपने आपने जो है अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे भी फोकस करना है अपने मेल मेंबर्स को भी बता रही होती हूँ कि भाई अपने सॉफ्ट स्किल्स को अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करना है लीडरशिप की तरफ जाना है क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो आपको स्टैंड आउट फील कराती हैं अभी आपने एक जिक्र किया था लास्ट में मेंटोर का तो मेरा सवाल ये कि हमारे जो भी जर्नीज होते हैं ठीक है इसमें मेंटोर का होना कितना ज़रूरी है क्योंकि जो अभी मैं लीड कर रही हूँ मेरे चैप्टर तो लीडिंग अ टीम तो वहाँ पे एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है कि हमें ना एक ज़रूरत नहीं है किसी मेंटोर की या किसी गाइड की जो कि मैं अपने देख रही हूँ और मैं आप लोगों को देख रही हूँ इंस्पिरेशंस को देख रही हूँ जिनको मैं फॉलो करती हूँ उनको देख रही हूँ तो वो हमेशा मुझे गाइड करते रहे वो बताते रहे कि मेंटोर एक वो इंसान होता है ना जो अपने 20 साल का तजर्बा 15 साल का एक्सपीरियंस वो आपको 20 मिनट्स की टॉक में बता सकता है अपने हाइज एंड लोज बता सकता है तो कितना ज़रूरी है मेंटोर का होना एंटरप्रेन्योरशिप में I think it's very important to have mentors in your journey. And the only challenge is that you need to have a mentor who does not get jealous of your progress. So in my journey, because I was sort of breaking the stereotypes on all the levels, and since last year, my initiatives have gone on national, international level, and I had to bear a lot of heat from people who I once look up to, and they would just tell me तुम skills पे focus करो तुम्हारा करने का काम नहीं है stuff. So मेरा unfortunately मेरे journey में I couldn't just trust on anyone to be my mentor, because if I'm only unfortunately जहाँ तक मैंने अभी experience किया है, होता ये है कि women empowerment और mentorship ना दोनों एक level तक काम करती हैं जब तक आप बराबर नहीं आ जाते. जैसे आप बराबर होते हैं तो क्लैश आना शुरू हो जाता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, स्किल्स आपने लर्न करनी, स्किल्स के लिए आप जरूर मेंटोर रखें, ठीक है. बट इफ यू आर रियली आफ्टर डूइंग समथिंग विच इज थोड़ी अबव एवरेज टाइप के आपके इनिशिएटिव्स हैं, यू माइट face a lot of heat, a lot of challenge, a lot of pushback. But I would say that just to sort of lay my back on, one person that I would call my mentor that I go back to is Alia Chandra again. She's my mentor from Silicon Valley, and because she herself is like super super successful, and she's a very humble woman. So whenever I go to her to take any advice, she's always been, and I think she's the one who really sparked up my confidence in myself that I can do way better than I was doing 2 years ago. So yeah, it's important to have mentors, but just be sure that people that you are choosing as your mentors need to have that breadth in themselves. अगर मैं देसी अल्फाज में कहूँ तो वो इतने रजे हुए हों कि उन्हें आपके आगे बढ़ता हुआ देख के खुशी हो, ना कि वो आपके अगेंस्ट हो जाए. एंड ऑल्सो just to give another bit on it, वो ये है कि whenever you choose a mentor, be a student, critical student. Don't be a follower. कि अच्छा हाँ मुझे ये लग रहा है काम करने का, लेकिन मुझे mentor ने मना कर दिया तो मैंने नहीं करना. If you really like have a drive for it, go for it. And if the mentor is sincere with you and you bring some results, they will be happy with you. So या just this is something that one has to be, sure about. आई एग्री मैं थोड़ा सा उसको टॉपिक को डायरेक्शन चेंज करना चाहूँगी यहाँ पे आप पाकिस्तान इको स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत अरसे से काम कर रही हैं एंड यू हैव बीन वर्किंग विद लॉट्स ऑफ स्टार्टअप्स आपका ऑलरेडी
स्टार्टअप बेस्ड 3 हैं जिसमें मैं बात अभी कर रही थी। एक मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम को आप किस तरह देख रही हैं कि इनमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं, क्या प्रोजेक्शंस हैं? और यहाँ पे यूज़र बिहेवियर कैसा है कि अगर आप किसी को, जैसे अभी आपने मेंटोर की बात की, तो मेंटोर आपको आप पर हीट भी आ सकती है, आपको बैकलैश भी हो सकता है। एक स्टार्टअप इकोसिस्टम में अगर हम किसी को गाइड कर रहे हैं, अगर हम किसी को मेंटोर करते हैं, एज़ आप अगर कर रही हैं, तो वो उस तरह का क्या सिनेरियो है कि कितने बिहेवियरल लैकिंग्स होती हैं, कितना क्या रिस्पॉन्स होता है स्टार्टअप की तरफ से? आई थिंक पाकिस्तान में स्टार्टअप इकोसिस्टम जो आज से तकरीबन 10 साल पहले था उससे बहुत बेहतर है। देखिए, हर चीज़ की ना स्टेजेस होती हैं। जब भी कोई नई चीज़ मार्केट में इंट्रोड्यूस होती है ना, पहले उसकी अवेयरनेस हेल्थी है। जितने ज़्यादा लोगों को पता चलता है उतना बेहतर होता है। फिर उसमें से कुछ लोग उसको कंसिडर करते हैं, कुछ लोग उसको ऑप्ट करते हैं, कुछ लोग स्टार्टअप बिल्ड करते हैं, कुछ लोग का खाली शश का प्रोग्राम होता है, अदर फाइंड आउट कि नहीं यार मुझको इसको चलाना भी है एंड स्टफ। सो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स। जिस तरह से अगर आप फ्रीलांसिंग की बात करें तो पाकिस्तान में जितने मल्टीपल इनिशिएटिव फ्रीलांसिंग के ऊपर है ना, यू सी a lot of freelancers, a lot of freelancers in Pakistan. The same happened with the startups in Pakistan, and now there are far more incubators than there were in 2015, I would say. So the startup ecosystem has grown a lot. और जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, some people दे से कि जी अब तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही, वो XYZ स्टार्टअप का मसला हुआ था, उसके बाद लोग पाकिस्तान मार्केट पे यकीन नहीं करें एंड स्टफ। वी डू हैव आवर चैलेंजेस। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज इन्वेस्टमेंट रेस करने का ये होता है कि जब कोई डॉलर्स में इन्वेस्ट करता है ना पाकिस्तान के बाहर से, तो उनको पैसे यहाँ पे भेजना आसान होता है, बट यहाँ से पैसा वापस लेके जाना उनके लिए बहुत मुश्किल है। दैट इज वन चैलेंज दैट वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन रिजॉल्विंग बाय डिफरेंट क्रिएटिव creative जैसे कह लें plugins by Pakistan Tech Forum as well to bring in investment from different countries. So इस वजह से कभी थोड़ी हर्डल आती है, but there are now more than ever बड़ी बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स की स्टोरीज हैं, people are raising. I think there's a startup around some medical thingy. There is about 1.8 million. There was a startup, I think, Bazaar, and they raised pretty good money. Colabs raised a lot of money in millions and all. So things are happening. Things are getting better. So yeah, Pakistani startup ecosystem is growing. And जो हमारा मसला आता है ना वो startup वाली side से ज़्यादा I would say कि जो हमारे law and order situation है उसकी वजह से मसला आता है कि लोग पाकिस्तान में उस तरह से इन्वेस्ट नहीं कर पाते। ऑलराइट। मेरा एक थोड़ा सा डिफरेंट अगेन सवाल है। इन टुडेज डिजिटल एज, ठीक है, हाउ इम्पोर्टेंट इज पर्सनल ब्रांडिंग फॉर करियर सक्सेस एंड एंटरप्रेन्योरल जर्नी? आप क्या टिप्स या हैक्स बताना चाहेंगी कि जो अभी स्टार्टअप करना चाह रहा है उसको, या जो ऑलरेडी स्टार्टअप के उस जर्नी में है, तो आप इंडिविजुअल के लिए उसकी पर्सनल ब्रांडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग कितनी अहम है स्टार्टअप करने के लिए? It's a very good question, and it actually has two extremes. There is those people on one side जिनका काम थोड़ा है but शोर बहुत ज्यादा मचाया हुआ उन्होंने, ठीक है। So when people who are actually into doing work and when they see their performance and all, they say कि अच्छा बस बातें ही होती हैं, and then they would put a label on the whole startup because ये startup वाले सारे बस बातें ही करते हैं, इनको investment मिल जाए, इनके 2-3 ब्लॉग्स के ऊपर पोस्ट लग जाती है and then that's it. थोड़े से बाद आपको नजर भी नहीं आता because इस तरह हुआ भी है, startup का इस तरह हुआ है, there is investment and then they vanish out of the ecosystem. दूसरी एक्सट्रीम ये है, people who are doing really good work जिन्होंने बूटस्ट्रैप करके चाहे वो कुछ बने हैं या किसी फॉर्मल इंक्यूबेशन सेंटर से उन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट रेज की है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट कमिंग एट द फोर फ्रंट टू सेट द राइट एग्जाम्पल। सो ये दो तरह के लोग हैं। सो पर्सनल ब्रांडिंग की जहाँ तक बात है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन एज आई एम सेइंग दिस, आई वांट टू पुट लाइक a caution here that do not be on that extreme कि आप पर्सनल ब्रांडिंग के पीछे इतना ज्यादा पड़ जाएं कि एट द एंड काम कोई खास हो नहीं रहा, or when people start to figure out what you are actually doing, it actually nothing but clouds and smoke. It's nothing. So that really puts a bad example for people. And for the other extreme who are just doing good work, जिनको बड़ा वो होता है जी, we are nerds, we're introverts and all, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपने खुद नहीं आगे आना, hire a marketer, hire a brand manager or something,
Because in today's time and age, आप मुझे बताएं कि a lot of people who connect with Facebook as a brand, they follow Mark Zuckerberg as well. Follow like not as in follow, but yes, they are eager to learn what the founder is doing. आजकल वो क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, तो उसकी प्रोफाइल भी देख रहे होंगे, उसके अपडेट्स भी देख रहे होंगे. Elon Musk is one big example. ठीक है, आपको खाली उसके इनिशिएटिव लॉन्च होते हुए नजर नहीं आते. इलॉन मस्क पहले से बहुत बड़ा ब्रांड बन गया. ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ मोर अभी खैर ये तो बहुत बड़ी मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. ये एग्जांपल देना मेरे लिए इसलिए जरूरी है कि अगर उनके आप शिकले ना भी देखे ना, तब भी इनकी कंपनीज बहुत बड़ी है, उनका बिजनेस चल रहा है. बट नाउ द ह्यूमन बिहेवियर हैज चेंज अ लॉट. पीपल लाइक टू वर्क विद पीपल दैट दे लाइक. हमें उस बिजनेस के साथ काम करना है, हमें उस लोगों के साथ काम करना है जिनकी वैल्यूज, जिनका थॉट पैटर्न, जिनकी ओपिनियंस हमारे से मिलती जुलती हैं. वन क्लासिकल एग्जांपल इज व्हाई पीपल वांटेड टू बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स. क्योंकि उनकी वैल्यूज, उनके जो ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन है वो हमारी डेफिनेशन के साथ नहीं मिलती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवन द अर्ली स्टेज फाउंडर्स. अच्छा, अब इसमें जो आपने टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की थी, I would say the best branding is the authentic branding. And it's no rocket science. इसको आप ये समझ लें कि अगर आपने अपने जर्नी में कुछ सीखा है स्टार्टअप के, just start sharing it so that this can help other people, right? लिंक्डइन के ऊपर शेयर कर दें, फेसबुक पे शेयर कर दें. आपको वीडियो का शौक है, वीडियो बना के कर दें. वीडियो का शौक नहीं है, लिख के शेयर कर दें. Then keep people updated about what is happening in your business. Because brands are like personalities, brands are like people. आप देखते हैं इसी ऐसे तो नहीं सफायर की सेल के ऊपर लोग जैसे गिरबान फाड़ रहे होते हैं. ठीक है, they're so attached with the brand, right? That's a one bad example, but you can see the influence, right? ऐसे नहीं टिम हॉर्टन्स यहाँ पे ओपन हो रहा था तो इतनी बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई थी. वैसे तो मार्केटिंग स्टंट्स भी होते हैं, बट स्टिल दे अगर मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, नॉट विद एथिकल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दैट्स अ गुड स्टंट, राइट? कि आपने Yeah, पहले लोगों को इतना अपने ब्रांड के साथ जो है ना वो. So emotionally people attached with. want to hear, yes, people want to hear what the startup is doing. Even when the startup is falling into challenges, share it out. People like to, and psychologically we connect with people that we can relate with. हर तरफ सक्सेस शेयर कर देना, ओ जी बड़ी फैंसी स्टोरी चल रही है जी, बहुत जबरदस्त सब कुछ चल रहा है. इट्स वेरी अनरियल. शेयर व्हेन यू आर फॉलिंग डाउन. शेयर योर pitfalls as well. So share your achievements, at the same time share a bit of your setbacks. Why? Yeah, Because it helps other startups to believe in themselves when they are not doing good. I actually yeah, a few months ago I actually sold my car to pay back my debt that I took for a huge event that I did, Skills Gala. It was a community commitment, no business intentions, no nothing. But then I fell short of budget and I had to take personal loans. I sold my car and I shared it publicly on my social media. कि भाई हर तरफ आप ऐसा बना नहीं रहे होते. There are a lot of times when you are so run out of your money that you're able to sell things, right? So it's very important to have an authentic personality, and that is how you build a strong brand because people can connect with you. अच्छा, एक सवाल है मेरे पास, जो मेरे जहन में अभी आपकी बात सुन के आया कि जब हम किसी भी स्टार्टअप पे करने पे जा रहे हैं, कोई स्टूडेंट है, तो इस बात की क्या रॉकेट साइंस अगर मैं कहूँ तो, या इसकी कोई कैसे पता चलता है कि स्टार्टअप कब करना चाहिए? एक्सपीरियंस के साथ, 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको स्टार्टअप की तरफ जाना चाहिए, या आप स्टूडेंट लाइफ में भी स्टार्टअप कर सकते हो? जो कोई पर्टिकुलर एज है या कोई पर्टिकुलर फार्मूला है तो थोड़ा सा शेयर करें. अच्छा, पहली बात ये है कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और ऑलराइट. दूसरी बात ये है कि कोई बहुत आसान भी नहीं है. एवरीथिंग नीड्स लर्निंग. आपने पेंटिंग भी करनी है ना, तो आप अभी मैं आपको कलर्स और ब्रशेस ला के दे दूँ, मुझे आप ला के दे दें, मैं नहीं कर सकती. मुझे शौक है, मैं कर नहीं सकती. आई हैव टू लर्न इट. ठीक है, आपके पास पैशन है, बहुत अच्छी बात है. यू हैव एन अच्छा. अब क्योंकि हमारे पिछले अर्से में इकोसिस्टम में ज्यादा जो स्टोरीज निकली हैं वो टेक स्टार्टअप्स की निकली हैं. तो कुछ लोगों को लगता है टेक्नोलॉजी बना लेना स्टार्टअप होता है. टेक्नोलॉजी आप कभी भी बिल्ड कर सकते हैं. आप स्टूडेंट हैं, आप टेक्नोलॉजी बिल्ड कर लें. बट इफ द टेक्नोलॉजी इज नॉट गेटिंग एनी यूजर्स, फर्स्ट आपकी स्टेज है यूजर्स की. आई वॉन्ट से कि आपने आज टेक्नोलॉजी बनाई, कल आपको पैसे आने शुरू हो जाए. बहुत अच्छी बात है अगर आने शुरू हो जाए, इफ यू गेट टू हैव दैट ट्रैक्शन. बट योर फर्स्ट स्टेज इज गोइंग टू बी to have users who really find it useful. Then you get it to, your freemium से आप अपने प्रीमियम उसकी तरफ जाएं कि लोग आपको पे करना शुरू करें.
By the time people are going to pay you, you are in business. And this can take some time. This can take a lot of pivoting. अगर मैं अपने कुछ फॉर एग्जांपल कोवर्किंग स्पेस it became profitable in 4 months. ठीक है, it had a lot of स्किल शुरू से ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके स्किल शुरू से बहुत पहले वो प्रॉफिटेबल हो गई. On the other hand, skill studio, which is very close to my heart, we had to do a lot of pivoting in it. Though 2.5 saal, we just cannot even think about having any money coming in. Whatever I'm earning from other ventures, I'm putting it again back into skill studio, right? So वापस आते हैं कि कब आपने स्टार्ट करना है. आई वुड सजेस्ट कि एक बंदा जो भी स्ट्रेट आउट यूनिवर्सिटी से बाहर आ रहा है ना, अभी दे नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने जो टेक्स्ट बुक में पढ़ा है ना कि कंपनी ऐसे फॉर्म करते हैं, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब चीजें बुक के अंदर आपको सेटबैक्स नहीं नजर आ रहे, आपको स्टेप्स नजर आ रहे हैं. ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कंपनी बन गई और बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया और आपने इस से मार्केट शेयर ले लिया, वट एवर. बट इन रियलिटी व्हेन यू आर डूइंग वन थिंग, द अदर थिंग विल कम आफ्टर फ्यू सेटबैक्स. द नेक्स्ट स्टेप विल कम आफ्टर सेटबैक्स. टीम ऐसे करके नहीं बन जाएगी. ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्निंग होगी, क्लाइंट्स आना शुरू हो रहे हैं, अगले दिन नहीं आएंगे, या शुरू में नहीं आएंगे, बाद में आना शुरू हो जाएंगे. सो दोज आर द टेस्टिंग टाइम्स व्हेन यू हैव टू बी वेरी पेशेंट. और इसमें अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपका फॉरबियरेंस बढ़ जाती है. तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट फॉर, अगर किसी को बहुत भी जल्दी है ना, बिकॉज दिस इज वन मिस्टेक दैट आई मेड इन माय अर्ली करियर, कि मैंने 3 महीने की इंटर्नशिप करके डायरेक्ट मैंने आई वेंट टू बिल्डिंग अ बिजनेस. आई वाज अर्निंग गुड मनी बट देन आई गॉट एग्जॉस्टेड वेरी सून. सो एटलीस्ट 2 साल जॉब करें, 1 से 2 साल जॉब करें. जॉब करने की सबसे मजे की बात यह है कि आप किसी और के एक्सपेंस पे सीख रहे हो. आई एम नॉट सेइंग इट इन अ बैड वे, बट आई एम सेइंग इट कि आप किसी की कंपनी में उसके डिपार्टमेंट चलते हुए देख रहे हैं कि ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये रियल टाइम मसले आते हैं. ठीक है, बिजनेस बढ़ाने में ये मसले आते हैं एंड एवरीथिंग. आप उस सिस्टम का हिस्सा बन के काम करके उन चीज़ों को इंटरनलाइज करते हैं, एंड यू विल सी हाउ दोज थिंग्स आर a reference to what you studied in your business studies, but they are different in execution. उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, आपकी मेच्योरिटी डेवलप होती है. मेन वाइल फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टेक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो साथ में टेक्नोलॉजी बिल्ड करना शुरू कर दें. ठीक है, बट गोइंग straight into building a startup after passing university, so the success ratio is very very small. और उससे होता क्या है कि जब हम अपनी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी तो हमारे पास लिमिटेड है ना, वो हम कुछ साल पहले बहुत ज्यादा टेस्ट एंड ट्रायल में लगा लेते. कुछ लोग होता है अच्छा ये तो नहीं है कोई सही करने की चीज, मेरी तो काम की चीज नहीं है, आई एम नॉट मेड फॉर दिस, मैं वापस जा रहा हूँ टू डू समथिंग एल्स, या मैं फ्रीलांसिंग कर लूँ, या मैं जॉब कर लूँ, जिसमें कोई मसला नहीं है. कहने का ये मकसद है कि व्हेन वी पुट आवर एफर्ट्स, व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, वी ओनली एंड अप बीइंग टायर्ड. सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि अगर आपको मेंटोर नहीं मिल रहे तो जॉब करें, सीखें, उसके बाद आए एंड देन स्टार्ट टू बिल्ड अप योर बिजनेस. ऑलराइट, चैट्स पे हमारे पास आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वहाँ से कोई क्वेश्चन लेके एंड देन इसको फॉरवर्ड करते हैं. Uh, हमारे पास मोहम्मद फरहान का क्वेश्चन है कि वन शुड डू सम जॉब बिफोर स्टार्टिंग बिजनेसेस. आई स्टार्टेड माय एजेंसी विदाउट एनी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ड्यू टू दिस आई फेस्ड अ लॉट. तो अभी हमने इस पे बात की थी, आई गेस ये इस पे हम थोड़ा सा और इसको कवर कर लेते हैं. या मैंने नाहिद बानो का क्वेश्चन है कि मैनेजिंग अ फैमिली एंड मैनेजिंग अ नंबर ऑफ कम्युनिटीज and companies must be difficult. How do you go about that? Yeah, that's a interesting one, I guess. Yes, it's a very good question. अच्छा देखें, एक तो ये कि अगेन when I started my career, तो वही काम जो आज करने में मुझे शायद 1-2 घंटे लगते हैं, वो करने में मुझे 8-10 घंटे लगते थे. 11 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में. ठीक है, सो बाय द टाइम, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स पे काम किया है, बहुत डिफरेंट रोल्स में, मेरी अपनी मेच्योरिटी, मेरी अपनी मैनेजमेंट, बहुत सारी चीज़ें रिफाइन हुई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एक तो ये चीज़ है. दूसरी ये चीज़ है कि आई एम नॉट अ सुपर ह्यूमन कि मैं सारे काम खुद करूँ. यू नीड टू हैव अ सपोर्ट सिस्टम विद यू. शुरू में आपको अपनी जगह बनाने के लिए और ये सारे सपोर्ट गेट करने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा. बट बाय द टाइम यू स्टार्ट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स, you earn people's respect. And Yeah. I would not really, I would say it will be very unfair if I contributed to my
efforts and result, I would say कि I did a lot of duas. ठीक है, दुआ मोमिन का हथियार है। तो मैं अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा दुआ करती थी कि अल्लाह ताला, आप बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल हो जाते हैं, तो प्लीज मेरी अम्मा को समझा दें व्हाट आई एम डूइंग इज वर्थ वाइल। ठीक है। एंड देन That's true. आई गॉट, या एंड माय मदर वुड से कि तुम जो है वो घर की, कभी कभी होता था उन्हें, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, मेरे ऊपर कोई खास जिम्मेदारी नहीं थी शुरू से। पहले पढ़ाई में अच्छी थी, फिर उसके बाद काम शाम करने लगी। एंड देन बट सम डेज माय मदर वुड से, तुम जो है वो घर के कामों में जो है ना अब इंटरेस्ट लिया कर, तुम्हारी शादी करनी है ना, और तुम जो इतने सारे काम करियो, अपने आप को आदत डालो कि ये सारे शायद बाद में नहीं होंगे। और उससे अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर देता है, एंड आई विल नॉट सेटल लेस देन शक्कर। अच्छा, अब इसमें मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत रिजिड हो जाए। एक और चीज मैंने जो सीखी है वो ये है कि हमारी लाइफ में ना 3 से 4 ऐसी प्रायोरिटीज होती हैं जिससे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा हम बहुत फ्लेक्सिबल हैं। सो व्हेन यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, आपको पहले खुद को पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ की कौन सी अनकॉम्प्रोमाइजेबल प्रायोरिटीज हैं। वो अपने पार्टनर से आप शेयर करें कि ये 4 मुझे बस करने दो, 3 या 4 वट एवर दे आर। ठीक है, उसके अलावा आई डू एवरीथिंग। जैसे व्हेन आई वाज टू गेट मैरिड, आई टॉक टू माय हस्बैंड एंड आई सेड कि देखें, मुझे अपने काम करने से नहीं रोकना। आई एम, I cannot best be described as a career oriented woman. I'm a vision oriented woman. I'm searching a meaning in my life, right? So I would expect some respect for that. ठीक है? And the very reason I'm marrying to you is because you have made yourself ground up. So you understand the value dreams, right? And then I, क्योंकि मैं अपने घर में तो काम नहीं करती थी ना, I said कि इसके अगेंस्ट मुझे घर में काम भी करना पड़ा ना, मैं करूंगी। ठीक है। एंड देन यू जस्ट लाफ्ड इट आउट। तो चीजें जो है वो मैनेज होती हैं। अच्छा, कमिंग फास्ट फॉरवर्ड कि आपको पहले अपने, व्हेन यू गेटिंग मैरिड यू हैव टू कम्युनिकेट वेरी क्लियरली विद योर पार्टनर। उसके बाद भी मसले आ सकते हैं, मसले आर पार्ट ऑफ True. लाइफ। मुझे अपने घर में भी तो समझाने में टाइम लगा था ना, घर वालों के लिए मैंने इतनी एफर्ट की थी, बट आई नेवर डाउटेड देयर इंटेंशंस। तो इसी तरह से व्हेन यू गेट मैरिड, डू नॉट डाउट द इंटेंशंस ऑफ द फैमिली दैट यू आर इन, बिकॉज दैट इज योर फैमिली। ठीक है। सो Yeah. आपको खुद भी इंड्योरेंस चाहिए होगी। अच्छा, उसके बाद ये है कि माय मदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर के तकरीबन 10-15 मिनट के फासले पे उनका घर है। तो मेरे बेटे को आई ड्रॉप हिम टू माय मदर्स हाउस व्हेन आई गो टू द ऑफिस। और क्योंकि मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वर्किंग, तो टीम वगैरह है, सिस्टम सेट है, तो मैं 5 से 6 घंटे के लिए ऑफिस जाती हूँ यूजुअली। तो मेरा टाइम भी बड़ा मैनेजेबल है। सो आई ड्रॉप माय सन टू माय मदर्स हाउस एंड देन आई गो टू माय ऑफिस। ऑन माय वे बैक आई पिक हिम अप। इसी तरह से व्हेन आई हैव टू गो टू आउट ऑफ कंट्री फॉर एनी प्रोजेक्ट, 8 से 10 दिन के लिए, एक तो ये कि मैं अकेले नहीं जा सकती। ठीक है, लॉट ऑफ पीपल हु थिंक कि अच्छा मैं, बिकॉज आई बीन वेरी आउट एंड अबाउट इन माय करियर, बट मेरे कुछ ग्राउंड रूल्स हैं, विच आर माय रूल्स। इट्स कंप्लीटली फाइन, आपके डिफरेंट और इट्स कंप्लीटली फाइन। आई एम जस्ट शेयरिंग कि हाउ यू, इफ यू हैव द विल यू विल फाइंड अ वे, राइट? तो माय हस्बैंड हैज हिज ओन बिजनेस, ही इज आल्सो इन द आईटी सेक्टर। ठीक है। तो ऑल ऑफ माय डेलीगेशन आई विल से कि यार, अब मेरे साथ चलेंगे आपको तो फायदा ही होगा ना, देखिए बाकी सारे भी तो आईटी के बिजनेसेस जा रहे हैं। So that's how I drag him in, and he always, is very helpful when he finally reaches there. पहले सारी मेरे पापा 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 हो रही होती है कि नहीं, मैंने काम देखना है, ये है वो है, मैंने कौन सा मुफ्त में जाना है, आपका तो सारा खर्चा उसमें से निकल आएगा, मुझे ये वाला बड़ा। But then, we just end up being together at the delegations as well. And it's and then once I also did this thing, I think 6 साल हो गए मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई 3-4 साल बाद मुझे किरा चला था to finally prove कि मैं कितनी सुगर बहू हूँ। So what I did was, मैंने को 2 महीने के लिए काम छोड़ दिया सारा, और मैंने घर का झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। ठीक है, Yeah. there is no harm in झाड़ू पोछा, but then one day I realized कि यार मैं वो जो हेल्पर रखी हुई थी उसी से मैं नहीं काम करा लूँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद भी I was not able to win a lot of happy faces. So I said I'm doing the wrong thing, क्योंकि क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने आपसे जो 5 बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो एक हदीस में मार के, यू कैन सर्च इट आउट। उसका एक सवाल मुझे हमेशा बड़ा अकाउंटेबल करता है। ये सवाल है कि आपके पास जो ज़रख़े ज़मीन थी उसका आपने क्या किया? अब इस्लाम में हमारे पास टीचिंग जो है ना मेटाफोरिकल है। ज़रख़े ज़मीन इज़ एनीथिंग दैट कैन प्रोड्यूस समथिंग फॉर यू, दैट कैन बेनिफिट यू। अब मुझे अल्लाह ताला ने इतनी वो जो सारे काम शाम करने के बाद एक नेटवर्क दिया है, एक इन्फ्लुएंस दिया है, सारी चीज़ें दी हैं।
आई हैव टू पे इट बैक। वो मुझे अल्लाह ताला ने इसलिए नहीं दिया कि उससे पहले मैं सारा जो है जी घर के काम सारे हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है और अब आके जी मैं अपने आप को सुपर प्रूफ करने में लग जाऊं। I was at the wrong track. So what I did was, and at the end, I was not able to make everyone happy, right? So this happens. Then you have to take a stand for yourself. तो मैंने बड़ा रिस्पेक्ट किया, मैंने कहा कि जी ये है जी झाड़ू पोछा, इज नॉट माई स्टफ। ये मेरी जगह ना, ये वाली वैल्यू एक हेल्पर भी प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन जो वैल्यू मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ ना, वो मेरी जगह एक हेल्पर नहीं प्रोवाइड कर सकती। सो आई बेटर गो एंड फुलफिल माई ड्यूटी। सो दैट्स आई केम बैक। इसी तरह से अगर आपको कोई जो शादीशुदा है, को घर में कोई मसला चल रहा हो, तो अपने पैसों में से कम नहीं रखें, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज मैं आपको एक और बताऊंगी दैट कंप्लीटली चेंज माय लाइफ एंड दैट मेड मी सो एम्पावर्ड दैट आई नेवर एवर थॉट। दो ढाई साल पहले आई वाज अ वेरी वेस्टर्न इंस्पायर्ड वुमेन entrepreneur, ठीक है। I was a completely changed person, but then I started to, when I went into this chronic depression and all, I was like ये मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। मतलब आई एम अ वेरी हैप्पी गोइंग पर्सन, ठीक है। जब चाहो सिनेमा चले जाओ, खाना खाने चले जाओ, टूर पे निकल जाओ, पहाड़ों में निकल जाओ, you like you name it. So those were the distractions, but something inside was killing me. And then when I went into this postpartum depression, coming out of that, मैंने कहा एक चीज ट्राई नहीं की। अल्लाह ताला से कनेक्शन है, कौन सा कनेक्शन है? जो सूफीज्म वाला कनेक्शन है, कवालियों वाला कनेक्शन है, ठीक है, वो वाला। Hmm. एंड देन आई थॉट कि यार भी इस्लाम भी पढ़ के ट्राई करने के क्या, बिकॉज आई वाज वेरी अफ्रेड। वो होता है ना एक बंदे को, आई डोंट नो में किसी को है या नहीं, बट आई विल बी वेरी ब्लंट हियर कि मुझे था एक बार सीख लिया ना, फिर प्रैक्टिस ना के तो गुनाह मिलेगा। हालांकि ना सीखना इन इटसेल्फ मुझे गुनाह दे रहा है, ठीक है। और मजे की बात है, आप सीख लें और प्रैक्टिस करने के लिए अल्लाह ताला आपको आपको आपके साथ नरमी का मामला है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला नोज कि उन्होंने क्या बनाया, ठीक है। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई completed my translation of the Holy Quran, and I did my advanced Sira series from Qadi Yasir. तकरीबन 2 साल लगे मुझे इसमें, along with my काम। ऑफिस आते जाते मैंने रास्ते में लगाया हुआ होता था। और एंड देन आई लर्न कि यार मैंने अपने ऊपर इतनी सारी वो चीजें ला दी हुई हैं जो कि मेरे पे फर्ज भी नहीं है। वो इंडो पाक कल्चर से आ रही हैं खवातीन के ऊपर। ओहो, Yeah, इस्लाम I जिस तरह agree. से आपको एम्पावर कर रहा है, भाई वेस्ट को बहुत टाइम है वहां जाने में। आई वाज लाइक यार मैं तो एक इंफीरियर लिटरेचर से अपना हिस्सा निकालने में लगी हुई थी, असल क्रक्स तो ये है। सो देन आई मेड दोज, मुझे मैंने कहा ना कि मैंने फिर अपने लिए स्टैंड लिया। सो व्हेन आई न्यू के नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज माय राइट, ठीक है। इससे ऊपर तो मैं जान भी दे दूंगी तो किसी के लिए फर्क नहीं पड़ेगा। पीपल वांट मोर ऑफ यू, राइट। सो अपने हकूक, अपने हकूक से पहले अगर मैं कहूँ कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप पूरी करें ना, एज पर इस्लाम अल्लाह ताला ने जो आपके ऊपर फराइज रखे हैं, दूसरे लोगों की जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आप एज पर इस्लाम पूरी करें, यू आर गुड। उसके ऊपर देन यू हैव टू हैव योर हकूक टेकन बैक। तो उसके बाद थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज ड्रास्टिकली फॉर मी All कि right. हाँ ये जो मेरा झाड़ू पोछे का काम है, हेल्पर भी कर सकती है। सो जस्ट रैपिंग इट अप विद कि you need to understand what your energy means and where do you spend it, and always remember कि वो जो 5 कड़े सवालों में से एक ये सवाल भी है कि आपके पास जो एक जखेज जमीन थी उसका आपने क्या इस्तेमाल किया। दैट इज योर इंटेलेक्ट, योर टैलेंट, योर नेटवर्क। इफ यू हैव वेल्थ, you know, if you have a mind that thinks, everything counts in that जखेज जमीन। All right. Thank you so much, Aisha, for joining us today. It was really inspiring, really insightful. Actually, मुझे goosebumps हो रहे हैं और मैंने बहुत कुछ actually learn किया यहाँ से. All right, and thank you so much, GDG Live Pakistan team, for having me as your host. And thank you again, Aisha, and thank you so much, audience, to has been such amazing audience. Let's Work wrap life up. for everyone, take care, duas Thank for you. everyone, I love us. Allah Hafiz.